वेलकम टू .NET टेक्नोलॉजी वीडियो सीरीज। आज की इस वीडियो सीरीज में हम स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक्स में सर्वर साइड सेशन मैनेजमेंट टेक्निक्स को स्टडी करेंगे। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन पोर्शन बिफोर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सेशन क्या है। सो सेशन मैनेजमेंट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग टेक्निक्स टू मेंटेन स्टेट। जनरली सेशन जो है वो यूज़र की इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए यूज़ होता है और उस बेसिस पर वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है यूज़र्स को। हमने सर्वर साइड टू टेक्निक्स स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया था। एक थी एप्लीकेशन स्टेट और दूसरी थी सेशन स्टेट। एप्लीकेशन स्टेट में क्या होता था कि सभी यूज़र्स को कॉमन स्टेट प्रोवाइड किया जाता था, वेयर इज इन अ सेशन स्टेट इट विल provide the different state to each and every individual user. So here the server maintain the state of user information by session ID. When a user makes a request without a session ID, ASP.NET create a session ID and send it with every request and response to the same user. अब हम सेशन को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर दैट पर्पज वी आर टेकिंग वन ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स ओवर हियर in a design portion and one of the button. Okay, set the text property of button control. Okay, on the click event I want to generate the session. I want to store the session information and then after we'll navigate on the next page. To store the session information you have to remember the code. First one is a session in bracket. You have to specify the object key element, then text box 1 dot text. Here is one line and another code to store the session dot add method. With the help of that you can also store the session. We are giving the different name and in a second argument you have to pass text box 1 dot text. Likewise it will helpful to store the session. Both can work. Out of two anyone can used. Response dot redirect, all we know the syntax to redirect new page. I have created here the second page session 2 dot aspx. Session 2 page load event, we have to write the code as mentioned here. First we will going to check that session username not equal to null. अगर वो null वैल्यू कंटेन करता है तो हमें मैसेज डिस्प्ले करना होगा, अदरवाइज हम जो यूजर्स नेम वहाँ पे इनपुट दिया होगा वो हम यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे. रिस्पॉन्स डॉट राइट welcome session username dot to string. We are converting object to the string. Else just print the message response dot write not valid. Now we are going to execute our program. Remember one thing, that by default in a .NET session timing is 20 minutes. If you are login or you are accessing any of the website and you are not going to perform any of the operation in a website for 20 minutes, then after session will expire. It will not give you
to access of that particular website. .NET. Welcome to .NET. You can see here. Same thing I am going to copy and open in another browser. I am here going to pass technology. It will give you the name of technology. Control C, Control V. It will give you technology. Here Control 2. It will give me .NET. If I am copying this URL and paste here in another browser, then it will give me the another information of the user, because this browser contain the technology user and this browser contain the .NET user. So likewise it will provide the different user information, store and maintain the state of user. In a session we want to modify the time of session, then we have to use one of the file, that's the web config file. वेब कॉन्फ़िग फाइल में आपको सेशन स्टेट की प्रॉपर्टीज़ और सम ऑफ दी मेथोडोलॉजीज जो है वो स्टडी करनी पड़ेगी, वो समझना पड़ेगा। उसके लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन में system.web टैग में सेशन स्टेट टैग क्रिएट करना है। उसमें थोड़ा कंसेप्ट है वो देख लेते हैं पहले। मोड में बेसिकली 3 मोड है, इनप्रॉक, एसक्यूएल सर्वर, स्टेट सर्वर। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम मोड डिफाइन नहीं करते हैं तो हमारी एप्लीकेशन जो है वो इनप्रॉक, इन प्रोसेस मोड पर वर्कआउट होती है। ऑफ, हम सेशन के स्टेट को ऑफ रखना चाहते हैं, ऑफ मोड पर रखना चाहते हैं, तब हम ऑफ सेट कर सकते हैं। और आउट ऑफ 3 अगर आपको अलग ही कोई मोड यूज़ करना है तब कस्टम में सेट कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एसक्यूएल सर्वर एंड स्टेट सर्वर 2 मोड ऐसे हैं, उसमें एसक्यूएल सर्वर में आपका जो सेशन इंफॉर्मेशन होगा वो एसक्यूएल डेटाबेस में स्टोर होगा। तो स्टेट सर्वर में क्या होगा कि आपकी इंफॉर्मेशन सेशन की जो है वो सर्वर पर स्टोर होगी, लेकिन आउट ऑफ द योर एप्लीकेशन पूल। सो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट यू कैन सेट एनी ऑफ द मोड। हियर वी आर गोइंग टू सिलेक्ट इन प्रॉक। देन आफ्टर one of the concept is cookieless. You have to set cookieless true or false. When you are set cookieless true, it indicate that session used without cookie, and when you set cookieless to false, it indicates session with cookie is used. By default sessionless is false. If you want to make it true, then you can define true. Now we are using timeout we can set here 20 minutes and end tag. So after 20 minutes it will end the session. Just save the file, close here. Now again we are going to run our application. So here you can see the difference of cookieless, false and true. It will provide us session ID in the browser, where first time we are going to run our application, at that time cookieless is false, so our information stored in cookie, so it will not going to give you session ID here. But when we are making the cookieless true, at that time it will not store our session ID in the cookie, but it will show our session ID in the browser. So it's a difference between cookieless true and cookieless false. Just give the name welcome.net. I am going to change the date and time, because if we are waiting for 20 minutes then it will take more time for us. Change 55, just change it.
So currently it's a 55. Then it will give us not valid because already 20 minutes is passed. So likewise you can use session in your application. I hope you understand the concept of session. Thank you for watching this video.